हाय लास्ट क्लास रे आमे डिस्कस करथिले को मेथड्स हम यूज करिबा आंसर देला बडे आमे एटा भी कथा हेतिले कि केमिति आमे कवर करिबा करंट अफेयर टॉपिक्स केमिति स्टैटिक टॉपिक्स को आज करंट अफेयर आमे स्टार्ट करूचे फर्स्ट क्वेश्चन दोची डिसैलिनेशन ऊपर लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन यूटिलाइजेस टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन वार्मर सी सरफेस वाटर एंड कोल्ड डीप सी वाटर टू वेपराइज द कंडेंस वाटर हाँ ठीक अच्छी क्वेश्चन ऑप्शन टा कहीं आम देखा कि केमती यूज करुच्ची कि सपोज रहा सी वाटर्स ओके यहाँ सरफेस वाटर यहाँ डीप सी वाटर्स यहाँ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस रही टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ये रहा 7 to 10 डिग्री सेल्सियस आम जाने भलसे कि डीप ओशन रे वाटर टे ठंडा थाए ओके नेक्स्ट कौन आसले आमर वाटर आमर वेपराइजेशन पॉइंट केते 100 डिग्री सेल्सियस बट एदमे एई प्रोसेस आमे कोन करूचे एटा को आमे लो प्रेशर रे कन्वर्ट लो प्रेशर को नहीं आउचे ए वाटर को तो लो प्रेशर रे आमे ए वाटर को पास करबा तो सेटा 25 to 30 डिग्री सेल्सियस तार बॉइलिंग पॉइंट आसी जिवो आ सेटा वेपराइजेशन हे जिवो तार जो सॉल्ट रहला सेटा सेट रहि जिवो आ वेपराइजेशन हे जिवो देन वेपराइजेशन हेला परे सेटा होतले कंडेंस केमती करबा सेई मेथड से करूचे आमे कि जो कोल्ड वाटर्स अछि याकू पाइप थ्रू रे एई लाइन देके पास करेबा ए लाइन देके तले पास करेबा से माने एई कोल्ड वाटर को टच करी कि से माने तापरे नॉर्मल वाटर आबारे ड्रिंकिंग वाटर आबारे कन्वर्ट हेल्प करिवो ओके तो ये स्टेटमेंट टा ठीक अछि नेक्स्ट स्टेटमेंट इंडिया's first LTTD plants were successfully established and operationalized in Lakshadweep Island yes this statement is absolutely correct unlike reverse osmosis RO LTTD plants do not produce highly concentrated brine that harms marine life actually it has reduced RO रे बहुत ब्रेन यूज होता बहुत ब्रेन यूज होता बहुत ब्रेन बाहर थिला जोटा हमर aquatic एनिमल्स को बहुत इंपैक्टफुल हार्मफुल रहउतला तो से माने कोन करले कि एई प्रोसेस रे जतल डिसैलिनेशन हमें करूजे तो सेही प्रोसेस रे हमें कोन करले एलटीडीडी प्रोसेस थ्रू हमें ए जो ब्रेन टा बाहर थिला सेटा को हमें कमाई देले एटा को हमें कमाई देले रिड्यूस कर देले बट नॉट एलिमिनेटेड क्वेश्चन कौन देछि अनलाइक रिवर्स ऑस्मोसिस एलटीडी डू नॉट प्रोड्यूस सो स्टेटमेंट रॉन्ग हे जाउछि ओके तो 1 and 2 ठीक option B is the right answer let's go to the next question consider the following statements regarding multiple myeloma and its treatment multiple myeloma is a type of blood cancer that develops in plasma cells which are type of white blood cell yes that is absolutely correct lenalidomide is an immunomodulatory drug widely used as a standard treatment for multiple myeloma. Yes, that is also correct. Under the TRIPS agreement, it has our TRIPS agreement, life-saving cancer drugs are permanently exempted from patent protection to ensure global affordability. Actually, नहीं केबे भी कोनसी भी जिनसो का हमें परमानेंटली एग्जेम्प्ट करि परिबानी ओके परमानेंटली हमें केबे भी काहा को एमती परमानेंटली एग्जेम्प्ट करि परिबा नाही बट हमें कोन करि परिबा गवर्नमेंट कोन करे कंपलसरी लाइसेंसिंग गवर्नमेंट चाहे जदी कंपलसरी लाइसेंसिंग करि परिबो एटा माने कोन कि आमे जतरो देखुचे गवर्नमेंट किछि गोटे प्रोडक्ट आसिला किछि गोटे सपोज कोविड टाइम रे आमे गोटे जने कंपनी किछि लॉन्च करले हमर तर वैक्सीन तो से कौन ताकू पैटेंट फाइल करिछि बोली से ही एक सप्लाई करिवो जोटा कि पॉसिबल हेबनी पैंडेमिक टाइम रे इम्पॉसिबल हे जिवो सब लोगों पाखरे पहुंचेबा तो सेही ताकू नजर रखी कि गवर्नमेंट कंपलसरी लाइसेंसिंग को फोकस को जाई परिवो जो थ्रू रे से अलगा कंपनी मानको को यार पैटेंट देई परिवो किंतु ता आगुर प्रोटोकॉल कौन कहूँ से माने ट्राए करेंगे कि म्यूचुअली सॉल्व करने प्रोसेस आउ जी भी टंका दबा कथा कि मॉनिटरी बेनिफिट दबा कथा से कंपनी को दे पारे अच्छा पैटेंट फाइल कले हमें टंका कहीं देवाक पड़े गोटे कंपनी तार सब मेहनत लगेला सब रिसर्च कला गोटे ड्रग पाइबापी गोटे रिजल्ट पाइबापी बट जदि से रिजल्ट समस्त सागर सेयार करदेव से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो खर्च करथिला सेटा बाहर केमती सपोज कंपनी ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट 500 crores खर्च कला लास्ट गोटे ड्रग पाइला जोटा 10 rupees रे बनी पारिबो तो ता पई एबे 10 rupees नुहे कॉस्टा तो ता पई होची 510 rupees पर 500 crores होची तार टोटल खर्च तो 500 crores पर तार फिक्स्ड कॉस्ट जाई सरला पर तार 10 rupees पर वेरिएबल कॉस्ट पके चलिबो हेले
कंपनी बी पाई कौन जदि से फॉर्मूला जानी देला तो ता पाई होचे 10 रुपीज होची तो टोटल एक्सपेंसेस तो सी स्टार्ट करियो 12 टका रे बिकिवा कालू 2 टका प्रॉफिट रखिकी तो कंपनी तो लॉस को पड़ेबो तो सेही जिंस को नजर रखि हमर पैटेंट टैक्स आस्तिला तो एबे कोन आसला कि आमे जानले कि कंपलसरी लाइसेंसिंग मेथड से नहीं परिबे बट परमानेंटली एग्जाम्प्ट करि परिबे नाही ओके सो ये स्टेटमेंट भूल हो गला स्टेटमेंट भूल होला पर हमरा ऑप्शन 1 and 2 इज द राइट देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट consider the following statements regarding Chilika Lake. It is the largest coastal lagoon in India and was the first Indian wetland to be designated of international importance under the Ramsar Convention. Last year OPSC रे questions आसार थिला एटा फास्ट की नुहे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन सही थिला बिकॉज OPSC रो से रॉन्ग आंसर की पाई 2021 या फिर 22 माने नहीं ठीक से बट से ईयर रे भी क्वेश्चन आसार थिला तो यदि प्रीवियस को आम जब जीवा से प्रीवियस क्वेश्चंस रे भी आउ थे बहुत सारे क्वेश्चंस पचारि सारी सो चिलिका बहुत बड़ इंपोर्टेंट फैक्टर ओपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रे सो एठी स्टेटमेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द इरावाडी डॉल्फिन ए फ्लैगशिप species found in Chilika Lake is currently listed as critically endangered on the IUCN red list. Okay, so here we cannot say actually Irrawaddy dolphin is critically endangered. Actually, Irrawaddy dolphin is endangered, categorized as endangered, not critically endangered, but endangered in IUCN red list. Next, a statement is भूल गला the Mongol Jodi bird sanctuary famous for its migratory birds is located on the northern banks of Chilika Lake. Yes, this statement is absolutely correct. ए क्वेश्चन टा आमे काहेकि पिक कले काहेकि रिसेंटली डॉल्फिन सेंसस हेतिला डॉल्फिन सेंसस हेतिला हमरा 2026 रे तो ए डॉल्फिन सेंसस रे में कोन पाइथिले कि टोटल इरावाडी डॉल्फिन चिलिका रे केते अछंती इरावाडी अछंती हमरा 159 जो 159 तो टोटल हमरा डॉल्फिन पॉपुलेशन केते कर दोची 705 टोटल सब डॉल्फिन मिसिके तो जोटा हाईएस्ट इन लास्ट 5 years लास्ट सो ए क्वेश्चन इरावाडी डॉल्फिन एवे पाई बहुत इंपोर्टेंट हे जाउछ हम पाई ओके सो ऑप्शन 1 इज राइट ऑप्शन 3 इज राइट देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन Adjusted gross revenue is the usage and licensing fee that telecom operators are charged by the Department of Telecommunication. Yes, the Department of Telecommunication the किसी ना किसी तो चार्ज करी वो licensing fee तो इट ऑफ सही adjusted gross revenue. हाँ okay. Next, the Supreme Court has ruled that AGR must exclusively include core telecom revenue exempted non-telecom revenue like deposit interest and asset sales. नाइ एक्चुअली गवर्नमेंट रो जो प्रोविजन आस्तिला आकु गवर्नमेंट कौन करथिला कि ब्रॉड सेंस रे नहीं आस्तिला ब्रॉड सेंस माने कोन हला कि जे कहथिला कि जोटा हमरो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर रे गवर्नमेंट कोन ऐड कला कि से मानकर टेलीकॉम रेवेन्यू आउ नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू तो ये जो दीटा जाक रहा दीटा जाक आड करथिला तो ताकू गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट विथहेल्ड करिछि कि आमे सेही दीटा जाक आमे काउंट करि परिबा तो ए स्टेटमेंट सेति पय रॉन्ग हि गला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूछि consider the following statements regarding the University Grant Commission and Higher Education. The UGC is the statutory body set up by the Government of India in accordance with the UGC Act 1956. Yes, this statement is correct. The national eligibility test is conducted by the National Testing Agency on behalf of the UGC for determining the eligibility for assistant professorship and junior research fellowship. Yes, this statement is also correct. Okay. Option C is the right answer. Actually, the smile is recently I got the UGC NET certificate of assistant professor in net management. Okay, let's go to the next question.
consider the following statements regarding green credit program. Okay, it is a market based mechanism designed to incentivize voluntary environmental actions across various sectors. Yes, under the GCP, individuals, communities, and corporations can earn tradable green credits for specified activities like afforestation and water conservation. Yes, that is also correct. এই দুইটা খালি নୁହେଁ, ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଥିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି କି ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆମର ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆମର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ରିଡକ୍ସନ. Okay, now statement 1 is correct, statement 2 is correct, option C is the right answer. Let's go to the next question. It says, consider the following statements regarding the banking sectors in India. A commercial bank is placed under the RBI's prompt corrective action framework, primarily based on parameters like capital to risk weighted assets ratio and net non-performing assets. Okay, actually ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, risk weighted assets ratio and non-performing assets. risk weighted assets ratio ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋଜ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ, ସପୋଜ ଲେଟ୍ସ ଆଜ୍ୟୁମ୍ 100 rupees ଅଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ତା ପାଖରେ. ତ এইটা କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କରେକ୍ଟିଭ ଆକ୍ସନ ମାନେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କାମ କରିବ ସେଟା ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବ ଆରବିଆଇ ଥ୍ରୁରେ, କି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ନନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍ ବି କେତେ ଅଛି, ମାନେ ତା ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ତ ଅଛି, ବଟ୍ ତାର ଯେଉଁ ଆସେଟ୍ସ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ କେତେ ରିସ୍କ ଆସୋସିଏଟେଡ୍, ଯେମିତିକି ବାଇ ରିସ୍କ ୱେଟେଡ୍ ଆସେଟ୍ ରେସିଓ. ରିସ୍କ ୱେଟେଡ୍ ଆସେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସେଟ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ବୁଡ଼ିଯିବାର. ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ, ମୁଁ ପର୍ସନ ଏ କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଲେନ୍ ଦେଲି, ସେ ପର୍ସନ ଏବେ ଡିଫଲ୍ଟ କରୁଛି. ସୋ ଯଦି ଡିଫଲ୍ଟ କରୁଛି ଦେନ୍ ସେଇଟା ମୋ ରିସ୍କରେ ଆସିଗଲା. ନନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ସପୋଜ ପର୍ସନ ବି କୁ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ଦେଲି, ସେ ପର୍ସନ ଏବେ ମୋତେ 90 days ମାନେ କିଛି ବି ରିଟର୍ନ କରିନି. ସୋ 90 days ଯାଏଁ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ତା ଆଡ଼ୁ ରିଟର୍ନ ମିଳିନି କି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିନି, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏବେ ନନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍ କାଟାଗୋରୀରେ କନଭର୍ଟ କରିବି. ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ. ନେକ୍ସଟ, payment banks, unlike traditional commercial banks, are not permitted to issue credit cards or advance loan to customers. Yes, that is also correct. They can accept small deposits, accept small deposits. Okay, provide payment and remittances service. Provide payment and remittances. ମୁଁ କ୍ଲାରିଟି ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ରେମିଟାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ. ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏ ଯାଇକି କାମ କରୁଛି ଦୁବାଇରେ କାମ କରୁଛି, ତ ସେ ଯଦି ଦୁବାଇରେ କାମ କରୁଛି, ସେ ସେଠି ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ ଇନକମ୍ କରୁନି, ସେ ତାଙ୍କ କରେନ୍ସିରେ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ଦିରମ. ତ ସେ ଯଦି ଦିରମରେ ଇନକମ୍ କଲା, ତ ସେ ଦିରମକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଠେଇବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରେମିଟାନ୍ସେସ୍. ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାର ମାନେ ସପୋଜ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଠେଇବ, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ ପଠେଇବ, ତାର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇବ, ସେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଠେଇ ପାରିବ ନା, ସେ ଫାଷ୍ଟ ପଠେଇବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥ୍ରୁରେ ଆସିବ. ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଦିରମକୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ ଯେଉଁଟା ବି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ଥିବ, ସେଇ ରେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପର୍ସନ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ. ସୋ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆସିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରେମିଟାନ୍ସେସ୍. ତ ରେମିଟାନ୍ସେସ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ କରିପାରିବ, ATM, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ସକୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ମାନେ. ବଟ୍ ସେମାନେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେନି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲୋନ୍ସ ଦେଇପାରିବେନି. ସୋ ଅପସନ୍ 2 is also correct. Now 1 and 2 correct, so option C is the right answer. Let's go to the next question. Consider the following statements regarding the Rushikula River in Odisha. The Rushikula River originates from the Daringbadi hills of the Western Ghats. Unlike the Mahanadi, Rushikula doesn't form any delta in its mouth. Okay, যেহেতু এইটা জানিছি আমি, এটা দারিংবাড়িରୁ ବାହାରେ ইস্টর্ন ঘাটরে. সো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ইজ করেক্ট. সেকেন্ড স্টেটমেন্ট কହୁଛି unlike the Mahanadi, Rushikula doesn't form any delta at its mouth. Yes, that is also correct. এইটা ଗୋଟେ one liner question ରେ ସବୁ questions ଆସେ, ଇଭିନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି CGL ରେ ବି ଆସିଥିଲା କି ଆମର କୋଉ ରିଭରଟା ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ କରେନି ତା ମାଉଥରେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର. ତ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସରୋ ଅଫ୍ ଗଞ୍ଜାମ
Ganjam. The mouth of the Rushikura River is globally renowned for the mass nesting of olive ridley turtles. Yes. ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏବେ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି ବିକଜ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ଟର୍ଟଲ୍ସ ଏଭ୍ରି ଇୟର ଆସନ୍ତି ନେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ କୋଉଠିକି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର ପାଖକୁ ସୋ ଅପସନ୍ 1 2 3 all are correct so all 3 is the right answer C is the right answer. Let's go to the next question. Consider the following statements regarding generative artificial intelligence. So before going to the questions ମୁଁ ଗୋଟେ short brief ଦେଇ ଦଉଛି generative ମାନେ କ'ଣ किसी भी डाटा सेट्स किसी भी न नहीं जदि किसी गोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्ट जेनेरेट करूची किसी गोटे जिनस डायरेक्ट जेनेरेट हैला डायरेक्ट पर्सनल इमेज डायरेक्ट वीडियो सपोज जेनेरेट करूची सेटा हम कोन कहूचे जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कोन कहूची जेनेरेटिव एआई मॉडल्स आर ट्रेन्ड ऑन लार्ज डाटा सेट्स टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड कैन क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट इमेज एंड ऑडियो. दैट इज करेक्ट. इन एआई टर्मिनोलॉजी hallucination refers to the phenomenon where a model generates confident but entirely false, illogical information presented as fact. देखो actually this what hallucination माने कौन एटा में suppose human person big दे हमें देखिबा कि मत suppose लागो कि मु का संग रोटे कथा होची जो जो देखिथिबो मूवी सन ऑफ सत्यमूर्ति आमर अलू अर्जुन कर थिला तांकर बड़ भाई को एक्चुअली हालुसिनेशन हेतिला तांको लागुतला कि तांकर सेक्रेटरी जॉन तांको पाखरे बुलछंती त सेटा होती से हालुसिनेशन. तो जेंति कि एआई टर्मिनोलॉजी रे भी सेम रहउची जदी से किछि एंटायरली फॉल्स और इलॉजिक इंफॉर्मेशन दोली त सेटा हम कोन बोचे हालुसिनेशन. दैट इज आल्सो करेक्ट. ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट. सो सी इज द राइट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज which of the following statements regarding the Global Biofuels Alliance is correct? The Global Biofuels Alliance was officially launched during the India's G20 presidency. Okay, it a बहुत दिन तले हितला actually, so it is also correct. India, Brazil, USA among the founding members and core initiators of GBA. Yes, that is also correct. The alliance primarily focuses on the widespread adoption of first generation biofuels derived exclusively from food crops. देखो actually it was a problem first generation कौन है एटी problem कि आमर जदि बायोफ्यूल आमे करछे आमे एबे कोन चलछि E20 गवर्नमेंट एबे कहउछि कि आमे एटा को आगु को नेकी जिवा E25 E30 जोठी कि हमर ब्राजील पहुंची सलाणी E100 पेट्रोल एबे आमे कोन ट्राई करछे कि E20 E25 E30 को कन्वर्ट करे बे E20 आमे ऑलरेडी अच्छे. त फर्स्ट जनरेशन माने हैला कोन कि जदी गोटे डायरेक्ट क्रॉप मु आनुची मु क्रॉप प्रोडक्शन करूची कि इथेनॉल पाइबा पई जेमती गोटे लैंड रे सपोज मु एटी शुगर केन लगेली ई जो शुगर केन हबो यार प्रोडक्शन सोली कोठी कि जीवो इथेनॉल प्रोडक्शन पई. एटा हला फर्स्ट जनरेशन. सेकंड जनरेशन जोटा हम 2G कहूचे 2G रे कोन हेबो 2G रे हेबो हमर जो जिंस गुडा हम सब जो वेस्ट मटेरियल्स हमें एबे सपोज राइस रो वेस्ट जोटा आसला सेही वेस्ट रे करि परिबा या फिर जोटा शुगर केन आसला शुगर केन वेस्ट मटेरियल्स को यूज करके हमें इथेनॉल प्रोड्यूस करि परिबा. हां एथरे टिके इफेक्टिव मिलिबो फर्स्ट जनरेशन रे बस सेकंड जनरेशन एक्चुअली इफेक्टिव काहे कि हमें फूड क्रॉप्स को तो बर्बाद करि परिबा ना इथेनॉल पई एनर्जी पई. तो करेंटली भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल ए माने सब 2G सेकंड जनरेशन बाहर करे पई बायोफ्यूल्स एबे इंटरेस्टेड अछंती सेथि में एला न्यूज रा रिसेंटली एबे देखिबा ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट देन B only 2 is the right answer. Let's go to the next question. It says consider the following statements regarding inflation targeting in India. Okay. Headline retail inflation in India is officially measured by the consumer price index combined. Yes, it is right. CPI आउ गोटे थिला ऑप्शन WPI. ये दुटा भीतर डिफरेंस जानि थिबो ना कि आंको भीतर डिफरेंस हला कि WPI केबे सर्विस काउंट करेनी CPI सर्विस काउंट करे. सो जदि सर्विस काउंट कला ताले सेटा कोन हबो कि बहुत लार्ज पोर्शंस नै के आसीबो. हम इंडिया रे हमर टर्शियरी सेक्टर जेहेतु कंट्रीब्यूशन अधिक त हमें इन्फ्लेशन काउंट करिया पई सर्विस सेक्टर को केन इग्नोर कर दबा. तो CPI को
by default आमे add करूचे. Okay, so headline retail inflation in India is officially measured by the consumer price index combined. Okay, it's the right answer. The Monetary Policy Committee of the RBI is legally mandated to maintain a inflation within a target band of 2% to 6%. Yes, it is correct. Actually, the confusion होता है words को देखे कि कहीं कि ना हमें कौन पढ़ी थी 4 plus or minus 2%, plus or minus 2%. तो प्लस 2 हेले 6% ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ 2 ହେଲେ 2% ହେଇଗଲା. ତ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼େଇଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ 4 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 2 ସେ ଜିନିଷଟା ଏବେ ମୋଡିଫାଏ କରିକି ଦେଇଛି. ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି. ତ ଅପସନ୍ 1 and ଅପସନ୍ 2 is the right answer. So ଏଠି ଆସିଲା C. Let's go to the next question. It says, consider the following statements regarding particularly vulnerable tribal groups. The PM Jan-Man scheme is specifically aimed at the comprehensive socio-economic development of PBTGs. Generalistic statement हबा कथा ही ठीक कहीं कि आ कौन पाए आस्तिला यदि सपोज PBTG आसेनी socio-economic पाए ताले हमें देखियो कि ताले आस्तिला कौन पाए ताले. So it is the right answer. Next, among all states and union territories in India, Odisha has the highest number of recognized PBTGs. एइटा हमर बहुत थर न्यूज रे अछि. हमर टोटल PBTGs इंडिया रे केतरा अछंती 75. ओडिसा रे केतरा अछंती 30. जोटा कोन करूची हाईएस्ट नंबर. एते नंबर से कोटी भी नाहंती. Okay, so एइटा ऑप्शन 2 is also correct. 1 and 2 correct. C is the right answer. Consider the following statements regarding Aditya L1 mission. It is India's first space-based observatory dedicated to studying the solar atmosphere. Yes. The spacecraft is placed in halo orbit around the Lagrange point, which allows it to continuously view the sun without any occultation or eclipses. Eclipses माने कौन जदि किसी गोटे छाई बने दोचे तो छाई बने बने. Okay, yes, it is also correct. Lagrange point जाइन जाइजी सेटा और Lagrange point also the best point to view the sun. So it is also correct. Option C is the right answer. Let's go to the next question. Consider the following statements regarding Kalinga temple architecture. The Kalinga architectural style is broadly classified into 3 main types like Rekha Deula, Pidha Deula and Khakra Deula. The Sun temple at Konark is an outstanding example of Khakra Deula style characterized by its barrel vaulted roof. First question, first option ठीक अछि जेतु तीनटा जनरलिस्टिक देछि होइट हम जानि छै समझते. ऑप्शन 2 8 भूल करे देला. खाखरा देउଳ नुहे एटा होछि रेखा देउଳ. एटा होछि एक्चुअली कोन की जोटा खाखरा देउळ एटा फ्लैट रूफ थाए माने हम जदि कहै वैतार टेंपल सी सब टेंपल ए सब थाए बट रेखा देउळ माने तार एमती स्पेक्ट्रल सैंक्ट्रम सीटा पर किछोटा थाए तेमती कर्व एक थाए. ओके, so it is incorrect. Option 1 is correct. A is the right answer. Now question number 15 says, consider the following statements regarding international climate finance. It says that the historic loss and damage fund was formally operationalized at the COP28 summit in Dubai. Yes, it is correct. Loss and damage. Actually, loss and damage कौन है? Suppose आमे इंडिया रे अच्छे. आमो इंडिया रे कौन आमे 3 साइड्स रे ओशन अछि. गोटे अज्यूम करिवा कि गोटे लैंडलॉक कंट्री नाही जेमति गेला अफगानिस्तान से तो को पटु साइड रे भी वाटर रे एसोसिएटेड नाहंती. बट जदी एबे अफगानिस्तान रे कोन है से माने सपोज लैंडलॉक कंट्री अफगानिस्तान से माने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करले. जदी से माने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करले ताले कोन है क्लाइमेट चेंज को इंपैक्ट पड़िबो. तो कोन अफगानिस्तान रे जो क्लाइमेट चेंज रो स्टेप्स निया हेजी सेटा कोन तळे सदर्न स्पेसिफिक ओशन रे पड़िबोनी. तो जदी पड़ुची क्लाइमेट चेंज रो इंपैक्ट बेसी जोर रे तो ए एरिया रे जो छोट छोट आइलैंड्स अछंती छोट आइलैंड्स तो तांको ऊपर तो हेवी इंपैक्ट पड़िबो ना मेजर इंपैक्ट. तो ए कंट्री तांको कंपेंसेट करिवो. ओके, द वर्ल्ड बैंक वाज डेजिग्नेटेड टू सर्व एज द इंटरिम ट्रस्टी ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड ऑफ इट्स इनिशियल ऑपरेटिंग फेज. यस, दैट इज आल्सो करेक्ट आंसर. C is the right answer. Let's go to the next question. Which says, consider the following statements regarding international trade frameworks.
India is the founding members of the Regional Comprehensive Economic Partnership. नाई एटा एक्चुअली एशियन कंट्रीज को द्वारा हितला जो माने फोकस करछंदी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो माने करथिले से माना होय होची इंडिया एथरु थिले मेंबर बट 2019 ने विथड्रॉ करनेला रीजन कोन रीजन एटा इंडिया ट्राई करथला कि जदी फ्री ट्रेड आमे ऑलरेडी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री बहुत इंपोर्ट कर जे आमे एशियन कंट्रीज कोठु जेमति कि मेजरली चाइना आमे चाइना कोठु बहुत अधिक इंपोर्ट करछे आ जदी फ्री ट्रेड हे जिवो ताहाले तो से माने आ माने हम कंट्री हम निजर ओन जो माने मैन्युफैक्चरर्स अछंदी से माने तो डरिवे से माने उल्टा आउरी डरछंदी कि न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया से माने को जो डायरी प्रोडक्ट्स आसीबो से डायरी प्रोडक्ट्स आसला पर इंडिया रो डायरी प्रोडक्ट तो किछि वैल्यू ही रहबनी सो इट इज द wrong answer kind of India 2019 no bahar sarisi the Indo-Pacific economic framework prosperity does not entail negotiation on traditional markets access or tariff reductions actually it is the right answer okay so option B is the right answer doesn't enter to negotiation so negotiation karibeni let's go to the next question. Consider the following questions, following statements regarding the legislative process in the Indian Parliament. A money bill can be introduced in either the Lok Sabha or Rajya Sabha with the prior recommendation of the President. ठीक है चेक कर देबो money bill को आर्टिकल आसी और चेक करके जणाइबो कमेंट सेक्शन रे money bill को आर्टिकल आसी can be introduced either in Lok Sabha or Rajya Sabha नहीं money bill only can be introduced in the Lok Sabha or the lower house of the parliament. तो statement भूले गला. Next statement कहूची the Rajya Sabha cannot reject a money bill. It can only make recommendations which must be returned to the Lok Sabha within 40 days. Yes, that is correct. So option B is the right answer. Let's go to the next question, which is statements regarding Subhadra Yojana. It is a flagship women's empowerment initiative recently launched by the government of Odisha. Yes, the scheme provides direct financial assistance structured in installments to the bank accounts eligible women to promote economic independence. एटा तो ठीक अछि नॉर्मल समझ जानथियो बट गवर्नमेंट क्वेश्चंस कोन करि पारे ठीक फ्रेम करे प्रोब्लेम कर दो कोन करिवो कि एज को एज गैप ग्रुप भीतर आछंती 21 to 59 मन रखिबो एटा सपोज गोटे पर्सन 61 अछि तो आमे तो भाबी देबा कि 61 तो दबा कथा हां देई थिबो बट ना 61 को मिलिबन तो 51 एटा होछि तार एज ग्रुप ए एज ग्रुप रे दबो सो ऑप्शन 1 and 2 is correct statement 1 and 2 is correct option C is the right answer. Let's go to the next question, which says consider the following statements regarding sickle cell disease. Sickle cell disease is an inherited genetic disorder that affects hemoglobin, causing red blood cells to become rigid and sickle shape. Sickle shape माने गोटे गोल केमती गोटे टाइप रही जाए जोटा कौन हुई कि हमर ब्लड सेल जो हम ट्रांसफर कर जो वेन्स भीतर सेटा जाई पारेनी सेटा एक्चुअली केमती हम यदि कहबा नॉर्मल लैंग्वेज रे बहड़िया टाइप रही जाए हाँ जब बड़ा टाइप लिक्विड रही फ्लो हो पार कि हो ना तो से कौन कर ब्लॉक कर दो गोटे जगह आ जोर ब्लॉक करते केवे लोक पारालाइज हो मरी भी सांगे सांगे नेक्स्ट कहूँ द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन एम्स टू eradicate the disease as a public health problem in India by 2047. Yes, that is correct. First is also correct. Option C is the right answer. Let's go to the next question. It says consider the following statements regarding snow leopard. कौन कहूँ एटा it is currently listed as endangered on the IUCN red list of threatened species. नहीं actually endangered नुहे से कोजे categorize अछि endangered नुहे vulnerable so it is wrong answer. The snow leopard population assessment in India confirmed that Ladakh holds the highest estimated population of snow leopards in the country. Yes, that is correct. So option B is the right answer. Now let's go to the next question. Consider the following statements regarding the T+0 trade settlement cycle introduced by SAP. So एटा कौन actually T+0 सुनते बड़े T+1 T+3 माने हला कि जो दिन actually trade होची सेटा होची T रे काउंट हला
T+1 माने गोटे दिन जदि आज ट्रेड होइछि ताले गोटे दिन पर तुमको तुम टंका रिटर्न मिलो सेटलमेंट क्लियर हेबो। T+3 माने कोन कि जदि आज सेटलमेंट होइछि 3 दिन पर क्लियर हेबो। T+0 माने कोन जदि आज ट्रेड होइछि ताले आज ही सेटल हेबो। T+0 it allows the clearing the settlements of funds and securities on the exact same days in the trade is executed. Yes, it is right answer. The T+0 settlement cycle is mandatory for all retail investors trading in the Indian equity cash markets. Actually, it is incorrect. काहेकि mandatory नुहे एटा कोन कराइतला voluntary. Voluntary माने कोन कि जो भी ब्रोकर चाहिबो से माने ऑप्शंस को देई परिबे बट एटा मैंडेटरी हमें कर नथिले. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची, consider the following statements regarding the pharmaceutical industry and patent laws in India. Evergreening of patents is strictly prohibited under Section 3D of Indian Patents Act 1970. Yes. तो evergreening का मानने कौन? Suppose मु गोटे patents पाई गली गोटे product रा. Suppose इटा गोटे X ना गोटे product मु तार patent पाई गली. ये जो X रो logo टा आज suppose एमती ताकु मु कौन कली मु एमती टिके बुले देली. अब एबे पुणी थर second year patent पाई try कली. एबे मते 20 years मिलला patent. एबे मु एमती बुले दे कौन कली कि यार भी patent नेली 20 वर्ष पाई. तो ये evergreening माने कौन मु सारा लाइफ पाई बस एबे एमती टिके टिके modify करी करी की जाउथिबी. तो evergreening को करिया पई Section 3D of Indian Patents Act बैन करूची. Next option कौन कहूची, the TRIPS agreement allows developing countries to issue compulsory license जो टाइम पढ़िथिले previous question रे. Okay, compulsory license to domestic pharmaceutical companies to manufacture genetic version of patented life-saving drugs without patent holders' consent. consent बिना तो नहीं पारिबा. Actually हाँ ठीक अछि माने statement ठीक अछि बट सेमानो कोन कि actually टांको किछि compensation किछि टंका दबाकू पड़े. Next question कौन कहूची, so statement 1 statement 2 is correct, option C is the right answer. Next question कहूची, consider the following statements regarding reverse osmosis desalination technology. It relies on a semi-permeable membrane that allows water molecules to pass through while blocking dissolved salts and minerals. Yes, actually it is correct. जो डिजॉल्व सॉल्ट्स रोचे सेटा तब से कोन करे कि मेम्ब्रेन रे छणा गोटे लगे दो जेते चा छणुचे सेमते गोटे मेम्ब्रेन लगे दो जोटी के तो वाटर पास करियो एम देसी की तो वाटर ड्रॉप जो ड्रॉपलेट्स गुडा कैरी करछि मिनरल से गुडा कैरी फॉरवर्ड है कि बस स्मूथ वाटर पळेबो. बट वाटर पळेबे प्रॉब्लम कोन हेबो, जो मिनरल्स हमर नेचुरल मिनरल्स थला वाटर रे से भी तो पळेला. तो सेति बाय समान लिखुचंदी कोन एडेड मिनरल्स माने से माने आर्टिफिशियल ऐड करछन मिनरल सेथरे वाटर रे. ओके, छाड़ दो सेटा टॉपिक पे पाइन में हमें कहबा कि डिजॉल्व सॉल्ट्स ब्लॉक कर दोची एंड मिनरल्स. यस, the process is energy intensive and produces high concentrated brain byproducts that can alter local marine salinity if discharged directly into the ocean. हाँ, हमें एक्चुअली पढ़िथिल ना फास्ट टू एलटीटीडी कथा से कोन करछि से हमर करछि कि लो प्रेशर रे करछि बट ये कोन करछि कि हाई प्रेशर रे करछि. हाई प्रेशर रे कले कोन हो बाय प्रोडक्ट जोटा ब्रेन आस्तिला से गोटा काम ओशन जोटा ओशन मेरिन लाइफ अछि मेरिन सैलिनिटी को खराब करछि और मेरिन लाइफ को खराब करछि. तो सेति पई हमें एलटीटीडी को नै के आस्तिले. ओके, सो ए स्टेटमेंट ठीक अछि, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement regarding Similipal Biosphere Reserve. Okay, it is the only natural habitat in the world to host melanistic tigers. Yes, actually yes. Melanistic tiger माने कौन कि तांकर बॉडी रे जो स्ट्राइप्स थाए ब्लैक कलर थाए से ब्लैक कलर स्ट्राइप्स थाए सेति पे हम तांको कहते melanistic tigers. The reserve derives name from the abundance of red seal cotton trees found in the region. Yes, actually it is correct. काहे कि ना सिटी जो ट्री मिले सेटा को हम कोन कहजे सिमुल ट्रीज. कोन कहजे हमें सिमुल ट्रीज. ए सील कॉटन को ट्रीज को हम कहजे सिमुल ट्रीज. ओके, तो अभी कोन करिवा
ଏବେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ 2009. Yes, it is also correct. Option C is the right answer. Next, consider the following statements regarding the foreign direct investment in India. Under the automatic route, non-resident investors of or the Indian company doesn't require any prior approval the government of India or the RBI. ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ରୁଟ୍ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ରୁଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଟ୍ ଯଦି ଏ ଲାଇନରେ ତମେ ଆସୁଛ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସପୋଜ ସ୍ପେସିଫାଇ ହେଇଛି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେମିତିକି ସପୋଜ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା କି ସିମ୍ କାର୍ଡସ୍ ତ ସିମ୍ କାର୍ଡରେ ଯିଏ ବି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ସପୋଜ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ନ ହେଇଥାଇପାରେ ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କାହାର ପରମିଶନ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉଟା ସବୁ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫରେନରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପରମିଶନ ଦରକାର okay so under the automatic route non-resident investor or the Indian company doesn't require any prior approval from the government of India or the RBI. Yes, it is correct. 100% FDI is permitted in the manufacturing of cigars, carrots and tobacco institutes under the government approval route. Actually 100% no, it is 0%. କାହିଁକି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ ହିଁ କରିନି ଏଫଡିଆଇ ଟୋଟାଲ 0% ହିଁ ଅଛି ଆଲାଉ ହିଁ କରୁନି ଟୋବାକୋ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ସୋ ଅପସନ୍ 2 ଇଜ୍ ଦ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଆସିଗଲା ଏବେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଦୁଇ ଯେହେତୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ କାର୍ବନ ବର୍ଡର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମେକାନିଜମ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ୟାରିଫ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଦ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ୟେସ୍ ଅନ୍ କାର୍ବନ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ଲକ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆମର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ସେଟାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଗାଉଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲଗାଉଥିଲେ ତାକି ସେଇଟା ସେମାନେ କହିବା କଥା କି ସେଇଟା ଅଧିକ କାର୍ବନ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଏନର୍ଜି ଜେନେରେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଆମର ଆସିଛି କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲେ The primary objective of CBAM is to prevent carbon leakage where companies move production to countries with less stringent climate policies. Actually, it is correct. Option C is the right answer. Let's go to the next question. Consider the following statements regarding pardoning powers in India. The President of India can pardon a death sentence, but the governor of a state cannot. Actually, yes, it is correct. प्रेसिडेंट पार्डन करें पार्डन माने कौन सपोज डेथ सेंटेंस मु एक्स पर्सन को दिया गला देन प्रेसिडेंट पाखु से गला प्रेसिडेंट कौन कर कि कहबे तू जा पूरा रास्ता रे जाके बुलेबे तो टेंशन भी रहना बट गवर्नर कौन कर सस्पेंड कर किसी दिन रेमेट कर या फिर कम्यूट माने कमई पार किसी भी कर बट ताकू कहि परिबो कि तोते निर्दोष रे छाड़ दउची जोटा प्रेसिडेंट को पाखरे ही ओनली पावर अछि ओके सो ऑप्शन 2 इज द रॉन्ग आंसर सो कौन ठीक है ऑप्शन ए is the right answer. Let's go to the next question. Consider the following statements regarding deepfakes. Deepfake माने कौन सपोज मु जनकर वीडियो बनैली सपोज आमे देखिथिबा इंस्टाग्राम रे बहुत सारा वीडियो चलथिबो नरेंद्र मोदी को नारे या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन को नारे समस्त नारे चलथिबो डिफरेंट वीडियोस जोटा कहार केबे देखिथिबो कि महेंद्र सिंह धोनी चलिक आसुवे जोटा कि एक्चुअली चलिक आसुन डिफेक्ट माने कौन है जोटा कि आमर गोटे केस भी होता रश्मिका मंदाना एक्ट्रेस किसी गोटे केस कर नेम रे कि डिफेक्ट यूज करके अलग कहार पर्सन वीडियोस वायरल होता सो डिफेक्ट कौन कौन इट इज सिंथेटिक मीडिया इन व्हिच पर्सन्स लाइकनेस फेस और वॉइस इज रिप्लेस्ड विथ समवन एल्स यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एक्चुअली इट इज करेक्ट So option 2 कौन कहती generative adversarial networks are the primary underlying machine learning frameworks used to create high quality deepfakes. Yes, actually it is correct. इधर ठीक है मन रखी दो एग्जाम भाई option C is the right answer. Let's go to the next question.
Consider the following statements regarding LUPEX, Lunar Polar Exploration Mission. It is a joint robotic lunar mission between the Indian Space Research Organization and European Space Agency. ନାଇଁ ନାଇଁ এটা actually ESA ନୁହେଁ JAXA Japan Aerospace Exploration Agency. The primary objective of explore the lunar south pole region to determine the quantity and the quality of lunar water resources. Yes, that is correct. So option B is the right answer. Let's go to the next question. It says consider the following statements regarding the Bali Jatra festival. Bali Jatra कौन कहूची? It is celebrated annually on the banks of Mahanadi river in Katak. जो माने जानी चुज आम ओडिशा को बिलोंग करते बाली यात्रा विषय बहुत भलसे जानी थी. The festival commemorates the glorious maritime history of ancient Odisha and its trade links with Southeast Asian regions like Bali, Java, Sumatra. आम जो मैंने भी ओडिशा हिस्ट्री भलसे जानी थी से मैंने एतिकी तो पढ़ी थी कि ओडिशा हिस्ट्री रे जेते भी किंगडम्स होइचंती जो माने एक्चुअली नावल ट्रेड रे बेस्ट थिले से माने ट्रेड करते साउथ ईस्ट कंट्री को सांगरे. It is officially begins on the day of Kartika Purnima. Yes, आम जो कहते बुद्ध बंदाण से एक्चुअली बुद्ध बंदाण हाँ तीन जाक स्टेटमेंट ठीक अच्छी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement regarding the gig economy in India. The Code on Social Security 2020 formally recognizes gig workers and platform workers for the first time in Indian labor laws. Yes, that is correct. A statement mal rakhibo. Gig workers are legally classified as traditional employees under the Industrial Dispute Act 1947, entitling them to fixed minimum wages. ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ gig workers. କେବେ ଶୁଣିଛ କି ଜୋମାଟୋ ସ୍ୱିଗି ଏମାନଙ୍କର କିଛି ସାଲାରୀ ଫିକ୍ସ ରହିବା ନାହିଁ. ସେମାନେ ତ ଏଇଟା କେବେ ଫିକ୍ସ କରାହେନି. ଏଇଟା କେବେ ଫିକ୍ସ ହେଇପାରିବନି. ଏଇଟା ନର୍ମାଲି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଗାଲି କ୍ଲାସିଫାଇ କରାହେନି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀଙ୍କ ଭଳି. ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ, gig workers different, gig workers different, traditional different. तो गिग वर्कर्स राइट्स पाई एटा में ऐड कले लेबर लॉज रे बट ना कि सेमानक पई किछि मिनिमम वेजेस फिक्स हला. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements regarding Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. कौन कहूची एटा? It aims to conserve at least 30% of world's land, inland waters, coastal areas, and oceans by 2030. The 30 into 30 target. Yes, that is correct. The framework is a legally binding international treaty that imposes economic sanctions on countries failing to meet biodiversity targets. Actually, legally binding, no, it is voluntary. Legally binding हेले कोई भी कंट्री आसीबेनी. सपोज लीगली बाइंडिंग कौन जिनस है हमें जेटा कहबा कि एबेठू ए आम कंट्री लीगली बाइंडिंग है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ताल तो आम कंट्री एबे तांकर जे चेयरमैन अछि तांको कथा नाचिबो हेई परिबोनी सेंती आम कंट्री एक्सेप्ट नहीं करिवोनी. सो इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, इट इज वॉलंटरी. सो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग आंसर. सो ऑप्शन 1 वी हैव टू गो विथ द स्टेप ऑप्शन ए. ओके. Consider the following statements regarding the recently struck down electoral bond. नहीं recently struck down में इटा बहुत महत्वपूर्ण नहीं वाला but जे देई जे हमें questions solve करता. The Supreme Court of India struck down the scheme ruling that it violated the voters' right to information enshrined in Article 19(1) Clause A of the Indian Constitution. That is correct. Under the scheme, only political parties registered under the Section 29A of the Representation of People's Act 1951 and which secured not less than 1%. It is the technicality. 1% of the votes pooled in the last general election were eligible to receive bonds. Actually, नहीं. कौन है वे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर आर्टिकल सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 समस्त एलिजिबल हेबे हमर डोनेशंस पाई. रिसेंटली बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज को आमर डी रजिस्टर करला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. कौन पाई?
बिकज ये जो फंडटा थिला ये जो डोनेशंस आसे से डोनेशनटा एक्चुअली एग्जेम्प्ट कराबे टैक्स रु टैक्स एग्जेम्प्टेड तो एटा को आज ए लूप होल यूज कले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन माने डिफरेंट कंपनीज माने से माने कोन करे निजो गोटे छोटिया पॉलिटिकल पार्टी हिसाब रे रजिस्टर कर देले जी पॉलिटिकल पार्टी हिसाब रे रजिस्टर कर देले से माने कोन थॉट से रहला कि से माने भी टंका इनकम करिवे टंका टैक्स एग्जेम्प्ट करिवे तो सितपई इलेक्शन कमिशन भी से माने को डी रजिस्टर कर देले so option 2 is the wrong statement. Statement 2 is the wrong statement. Statement 1 is the right. So option A is the right answer. Let's go to the next question. Consider the following statements regarding the navigation with Indian constellation. Navig. It is regional satellite navigation system designed by ISRO to provide accurate position information service to users. India and the region extending up to 1500 kilometer from its boundary. Actually, yes, it's correct. এই ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବା କି ଏଇଟା 1500 କିଲୋମିଟର କରୁଛି ସୋ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଭଲସେ ଓକେ କାହିଁକି ନା ଏକ୍ଜାମରେ କ'ଣ ହେବ କି ଏଇଟା ଦେଇଥିବ କି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ରେଞ୍ଜ 5000 କିଲୋମିଟର ଓକେ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିବ The Navig constellation relies entirely on satellite-placed geostationary Earth orbit. ନାଇଁ actually ନାଇଁ ସେଇଟା geostationary orbit ରେ ବି ହବ ଆଉ ହେବ geosynchronous orbit ए both orbit ରେ ସେଇଟା କାମ କରେ ପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଇଥାଏ so option 2 is the wrong statement then କୋଉଟା ଠିକ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହବ right answer ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା Consider the following statements regarding Artemis record. The Artemis record are a set of non-binding principles. Non-binding. Here he generalistic statement is designed to guide civil space exploration and use in the 21st century. It start करायला NASA through the start करथिला. So yes, it is correct. India became a signatory to the Artemis record, signaling its commitment to participate in the US-led lunar exploration program. Yes, actually, आमे sign करी सारजे एटा को तो ऑप्शन सी could be the option right answer. Let's go to the next question. এটা एक्चुअली कोन पे कराइतला कि हमरो जो डेब्रिस स्पेस डेब्रिस हम अर्थ पार जो स्पेस डेब्रिस होती जो सैटेलाइट हमरो सपोज तर टाइम सरी गलानी से माने ऊपर रही गले बट एबे अलगा ओड सैटेलाइट से पड़े आसला त संगे सपोज एक्सीडेंट होला देन यार जोटा आरो तो लाइफ टाइम तो सरी गला उल्टा आवरी से एरिया टा कोन हे गला कि बहुत खराब एक रही गला सब डिफरेंट डेब्रिस पड़ी के रही गला तो एबे कोन हेबो कि आ इम्पॉसिबल हे जो किछि न्यू लॉन्च पाई ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ କି ସେଠି କିଛି ବି ଡେବ୍ରିସ୍ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟେମିସ୍ ରେକର୍ଡକୁ ଆଗକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନା ଆର୍ଟେମିସ୍ ରେକର୍ଡ ସେଟା ନୁହେଁ ସରି ଏଇଟା ଲୁନାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ନାଇଁ ଆର୍ଟେମିସ୍ ନା ଏଇଟା ଲୁନାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ସେଫ୍ ଲୁନାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା Consider the following statements regarding Mahanadi River dispute. In the dispute primarily involves water sharing between the states of Odisha and Chhattisgarh. Yes, I mean, जानिचे बोल से कितने issues है इतला. Under the Interstate River Water Dispute Act, the central government constituted the Mahanadi River Disputes Tribunal to adjudicate the matter. Yes, that is also correct. Both statements are correct. Option C is the right answer. Let's go to the next question. Consider the following statements regarding MSP. MSP is fixed on the recommendation of the Commission for Agricultural Cost and Prices. Yes, it is correct. The CSCP currently recommends MSP of for 22 mandatory crops and fair remunerative price for sugarcane. यही FRP माने कौन? Suppose government decide कला 1200 per kg. It was the fair remunerative price. माने इतनी की टंका मिनिमम में तो दबा दरकार. Excuse me. माने एतिकी टंका आमे ताकू दबा दरकार ताकि से जेतिकी टंका खर्च करिसन तांकर फार्मिंग रे सेटा तार रिकवर हे पाइबो सो इट वाज द फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट या टू कम रे केही किने भी पारिबानी नेक्स्ट को जिबा एटा ऑप्शन ठीक अछि द फाइनल डिसीजन टू अप्रूव एमएसपी इज टेकन बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर यस दैट इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट 38
Consider the following statements regarding the cheetah reintroduction project in India. Cheetah कोड आसले हमरो देखि दो भल से टिके ए जिंसटा कि cheetahs are translocated to India from the African nations, specifically Namibia, South Africa. The Kuno National Park, एटा सबबडे न्यूज था कि Kuno National Park कोठी अछि मध्य प्रदेश, was selected as the first introduction site due to its suitable grassland and savanna habitat. Yes, both statements are correct. Option C is the right answer. एटा क्वेश्चंस को मैं ऐड काइन कले हमर चित्ता पॉपुलेशंस बढ़ी छि, एक्चुअली इंक्रीज हेछि. जो चित्ता पॉपुलेशन इंक्रीज हेछि हमर सेति पई क्वेश्चंस एबे न्यूज अछि. एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. Consider the following statements regarding the basic structure doctrine. The doctrine was first established by the Supreme Court of India in the Golaknath case. Nahi, Golaknath case nuhe. Kesavananda Bharati case. 1973. ये एक्चुअली केस करनथले बेसिक स्ट्रक्चर पाई से केस करथले आर्टिकल 26 अंडर से जाइथले एक्चुअली जो आर्टिकल जोटा हमर छला आर्टिकल 300 ए जोटा हमर राइट टू प्रॉपर्टी अछि से राइट टू प्रॉपर्टी पाई केस करिया को जाइथले जेतु तांकर जो मठ थिला से मठ को ऑक्युपाई करा होतला. बट केशवानंद भारती केस को केशवानंद भारती को से कहले समस्ते सजेस्ट करथिले कि जे राइट टू प्रॉपर्टी केस तुमे फाइल करूछ देन तम केसेस रिजेक्ट हे पारे. सो से केस कौन करथिले आर्टिकल 26 अंडर रे फंडामेंटल राइट पे आज इट इज ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. तापरे धीरे 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 ई जिनसर नेक्स्ट फेजेस रे किछि किछि केसेस आसीगी एटा गोटे बड़ अपील हैला और सब लार्जेस्ट बेंच रे एटा सुप्रीम कोर्ट हियरिंग देथिला जेहेतु से फास्ट केस फाइल करथिले तो तांको नारे जजमेंट आसला केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 90 गवर्नमेंट ऑफ केरला फिर यूनियन ऑफ इंडिया 1973. तो एटा आसला सीट केस रे. तो ये स्टेटमेंट भूले गला. इट स्टिपुलेट्स that the parliament's constituent power under article 368 does not enable it to alter the basic structure or framework of the constitution. Actually supreme court कौन कहला समस्त कन्फ्यूजन कि सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट केसेस भी आसी कि सुप्रीम कोर्ट कौन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करि परिबो डिसाइड करि परिबो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करि परिबो. एक्चुअली ना सुप्रीम कोर्ट रो बेसिक स्ट्रक्चर मीनिंग एक्चुअली कौन कि तमे सपोज गवर्नमेंट कि आमे एई पर्टिकुलर पार्ट को जे तमे टच करिवो आमे सेटा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहिबा को जाउछु. जदि आमे कहिबा को जाउछु देन आमे किछि गोटे प्रिंसिपल कर देलु जे एई प्रिंसिपल एई बॉक्स को टच करता. जदि टच करबो आमे सेटा को बेसिक स्ट्रक्चर वायोलेशन पे आमे तो रिजेक्ट कर दउ. तो आमे कंटीन्यूअस केसेस को अवॉइड करिया पय आमे किछि गोटे गाइडलाइन सेट कर देलु बस तमे तमरो काम करो बस एई पर्टिकुलर थिंग्स को तमे टच करबा. Okay, so that was the basic structure. So statement 1 is incorrect, statement 2 is correct, option B is the right answer. Let's go to the next question. 5G networks operates on the distinct spectrum bands low, mid and high band millimeter waves. Yes, network slicing is a feature of 5G that allows operators to create multiple virtual networks on a single physical 5G network. यार मीनिंग कोन एटा एक्चुअली ठीक अछि. मीनिंग कोन स्लाइस करे माने कोन मु गोटे बढ़िया एग्जांपल दउछि. सपोज गोटे रोड अछि एटा हमर NH16 अछि ना हमर केतरा लेन अछि 1 2 गोटे एटा गोटे लेन दुटा लेन तीनटा लेन एटा रिटर्न पाई गोटे लेन दुटा लेन तीनटा लेन हला. तो ए जो लेन हमें तीनटा डिवाइड करछे किछि वर्जी फास्ट मूविंग व्हीकल को पाई किछि अछि स्लो मूविंग व्हीकल को पाई किछि अछि डिफरेंट व्हीकल को पाई कोटा ओवरटेकिंग लेन मैटर करूनी. बट जो तीनटा जगह रहले ना रोड रही पार्ट ना तो गोटे टाइम रे साइमल्टेनियसली तीन जण ऑप्शन जेको जाउछंती एमति नाही जे गोटे टाइम रे हमें कहूचे कि तू ये गला आको तापर ई माने जिबे ना सेमति नै. एक्चुअली गोटे टाइम रे तीन जण जाको भी जाई परिबे. सेमति 5G कोन हैला कि हमें तो डिफरेंट जगह रे यूज करि परिबा किछि भी इंपैक्ट पकेबन तर नेटवर्क बैंडविड्थ ऊपर. ओके, सो ऑप्शन दी जस्ट पॉइंट ठीक है गेला. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements regarding the X-ray polarimeter satellite XPOSat. It is the India's first dedicated polarimeter mission to study the dynamics of bright astronomical X-ray source in the extreme condition. Yes, it is correct.
Yes, it is India's first dedicated polarimeter mission. Right. The statement is right. The second statement saying that the ExpoSat is the world's first ever mission globally to utilize X-ray polarimeter, succeeding previous NASA missions that failed to achieve this. NASA success ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ପଛରେ ବହୁତ ପଛରେ ଆସିଛି, NASA ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ କରିସାରିଛି। ତ ଅପସନ୍ 2 incorrect ହେଇଯାଉଛି, statement A is the right answer. Let's go to the next question. Consider the following geographical indications from Odisha. Oh, Odisha Rasogola. The history ru questions पळे आसी कि रसगोला कहार रसगोला हमर जे टाइप मिली सारिछि authenticated. So option A right, statement 1 रसगोला को मिली सारिछि, कंदमाल हल्दी को मिली सारिछि, कोरापुट कला जिला राइस को भी मिली सारिछि. So D is the right answer. Let's go to the next question. Consider the following statements regarding the internationalization of the Unified Payment Interface UPI. NPCI International Payments Limited जोटा होची NIPL is wholly owned subsidiary of NPCI devoted developing UPI and RuPay outside India. Yes, এটা होची NPCI ର wholly owned subsidiary. Several countries including France, UAE, Singapore have integrated with the UPI framework to enable cross-border transactions. Yes. देखिए डिफरेंट रिल्स रे किसी किसी लोक अछंती जो फ्रांस या फिर यूएई रे अछंती आ से फोन पे रे ट्रांजैक्शन अछंती आ तांकर प्राइस ता तांको फोन पे जो भी अकाउंट अछि इंडियन बैंक्स रे सेटा ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट नै कि देखौथिबो। सपोज तांको पाके 20 रुपीस अछि सेटा 1 dirham में कि देखौथिबो, समान सेठी पेमेंट करछंती। ओके, नेक्स्ट को जीवा 44. Consider the following statements regarding green hydrogen. Green hydrogen is produced through the electrolysis of water using electricity generated entirely from renewable energy sources. जेहेतु green hydrogen देछि तो obviously renewable energy ही बनाउतिबो. The National Green Hydrogen Mission aims to make India globally hub for the production, usage and export of green hydrogen and its derivatives. देखो generalistic statement ठीक हवा ही हबो. The first green hydrogen plant कोठी लागितला, कोठी लागिछि मुंद्रा पोर्ट, गुजरात. ओके, वे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची, consider the following statements regarding the delimitation commission. बहुत न्यूज रे अछि बे करेंटली रिसेंटली नारी शक्ति बंधन अधिनियम से बिल को नहीं की. The delimitation commission is appointed by the President of India and works in collaboration with the Election Commission of India. नहीं collaboration में Election Commission of India assists the delimitation commission, collaborate करें. Next, the order of the delimitation commission have the force of law and cannot be called into the question before any court. Actually, it is correct. It is correct. It is wrong. এটা আমি কো আর্টিকেল আসছি, আর্টিকেল 82 অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিट्यूशन কি ডিলিমিটেशन কমিशन হেব. এবে কি কই পৰিব কি আমাৰ কো সেন্সাস রে আসছি, এবে আমাৰ আসছি 1971 সেন্সাস রে আসছি, যোডক আমাৰ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 ए फ्रीज करथले. फ्रीज करवा रीजन की जानिजो, फ्रीज करवा रीजन होची ई पॉपुलेशन नॉर्दर्न इंडिया रे बढ़ी चलले और सदर्न इंडिया रे से कंट्रोल कर चलले. जेतले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होतला नॉर्दर्न इंडिया रे से कंट्रोल कर चलले. जदि हम पॉपुलेशन बेसिस रे हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असाइन करि चलिबा ताल नॉर्दर्न इंडिया रे अधिक एमपीस मिलि जिबे और सदर्न इंडिया को कमी जिबे. तो एटा तो गोटे पनिशमेंट हे गला तांकर पॉपुलेशन मेजर्स नवा पई. तो सही जिंस को नजर रखि कि हमें कोन करथले एटा को फ्रीज कर देथिले. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. एबे एटा कोनला बी होछ त आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. Consider the following statements regarding the India semiconductor mission. It aims to build a vibrant semiconductor and display ecosystem to enable India's emergence as a global hub for electronics manufacturing and design. Yes, it is correct. It is generalistic statement ठीक ही है वो. The mission operates as an independent business division within the Digital India Corporation. Yes, it's generalistic statement ठीक है वो ही है वो. C is the right answer. Next question. Consider the following statements regarding the NISAR mission. हमें पढ़ी थी last year OPSC रे. NISAR is a joint Earth observation mission by NASA and ISRO. Yes, it will use advanced radar imaging to map elevation of Earth, land and ice masses, helping monitor changes such as
tectonic movements and glacier melting. Yes, it is the right answer. 47 answer is C. Consider the following statements regarding Odisha Millet Mission. The primary objective is to revive millets in farms and places to ensure nutritional security and promote climate resilient agriculture. Yes, it is correct. आम इंडिया पे प्रमोट कर ड्राईलैंड फार्मिंग को तो ड्राईलैंड फार्मिंग अंडर आम मिलेट फार्मिंग मन अच्छे कि आगुरी कौन होता ये मांडिया को आम कौन कहते कि गरीब को खाद्य कहते लोक मैंने सी कौन होता कि से जिनस से टैगलाइन लोक मैंने दूरे जाते बट एवं जो मांडियार न्यूट्रिशनल वैल्यू समस्त देखिले मिलेट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू देखिले डिफरेंट डिफरेंट मिलेट्स तो तापर एबे सेटा समस्त खाइबा हो जाए समस्त मैक्सिमम लोक घरे से मिलूँ तुम देखिए सुभद्रा शक्ति सब को जीव से स्टोर एटा भी 80 रुपीज पर केजी बिकुंट मांडिया को जब कि अटा आमर 50 रुपीज पर केजी मिल जाऊँगी तो मांडिया गरीब लोक खाद्य नुहे. Okay, next question. The mission is recognized globally and has highlighted by UN Food and Agriculture Organization as a model for promoting neglected crops. Yes, आमे कौन करतली 2023 को International Year of Millets भी आमे declare करी सारचे. So it is the right answer. Option C becomes right. For tax माने कौन होची कि हम जब देखिले suppose गोटे कंपनी किसी इंटरनेशनल इवेंट्स पाई 10% इनकम करथला अबे 500% इनकम करूची प्रॉफिट जनरेट करूची सो सेटा को सडन चेंजेस होला ता ऊपर गवर्नमेंट के चार्जेस लागो सेटा काम करथे windfall tax. It is a higher tax rate imposed by the government on specific industries that experience sudden and significantly above average profits due to external events rather than their own investments or expansion. सेमाने किसी expansion को नहीं but किसी changes असला international market से सेमाने सेमाने income करछन. Yes, that is correct. In India, a windfall tax has never been applied to the domestic crude oil production sector. सेटा ही तो हुई सी actually. Domestic crude oil ऊपर 2022 taxes लगी चलती. अभी भी recently जो event चली थी war पाई से पैसे भी domestic crude oil ऊपर impact पड़ी चलती. अब government तांको ऊपर tax लगा चलती refineries को ऊपर. So option B is the statement 2 is the wrong answer. Option B is the right answer. Statement A ठीक है वाला. National Tiger Conservation Authority is a statutory body under the Ministry of Environment and Forest and Climate Change. Actually, yes, it is comes under the Wildlife Protection Act 1972. So, ठीक अच्छी. According to the latest All India Tiger Conservation Cycle, the tiger population in India has shown a steady decline due to human-wildlife conflict. Actually, नहीं. Actually, population बढ़ी चंती, कमी ना आंती. So, सेती बाई इरा news रे अच्छी. So, statement भूले गला. Option A is the right answer. So आज पाई एतिकी एंड करिबा बाकी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट करंट अफेयर सेशंस पॉलिटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी रो स्पेसिफाइड सेशंस हमें नेक्स्ट कंडक्ट करिबा. थैंक यू. गुड नाइट.